Most respected guest speaker for the day, Professor Rosa Lopez D'Amico from Venezuela, Dr. Yuri, Dr. Darling Kluka, Dr. Beatrice, Dr. Claudia, Dr. G. Kishore, and all my dear PE teachers and coaches, welcome one and all to the Batch 5 EN Community Coaching Program. Indeed, we are very fortunate today to have amongst us the president of IPASCOE, International Association of Physical Education and for Sports for Women and Girls, who has made this PE program a truly international one. So the ministry is indebted to the president of IPASCOE because IPASCOE is a true leader to make it a global event. I take this opportunity to introduce our renowned speaker. Madam Rosa Lopez D'Amico is a professor at the Universidad Pedagógica Experimental Libertador, Maracay, Venezuela, coordinator of the Research Center, Studios and Educación Física, Salud Deporte, Recreation and Dance, Eduficidad. She has done research focused on physical education, comparative studies in sports, sport policy, sport management, gender, culture, and literature. She's on the editorial board of various academic journals and current editor of the Latin American Journal for Sport Management. She has more than 70 referee papers, 18 books, 10 proceeding books, 50 chapters in books. She has participated in conferences, presentations in all the 5 continents. In 2007, Madam received the highest research award given by the Venezuelan Council of Universities, CDCHT, as well as the scientific awards by the Iraq State and the University for Research Legacy. She's been Director of Research and Graduate Studies at the UPEL Maracay 2003-2007, State Sport Director 2009-2011. In a previous gymnastic career, Madam was a member of the Venezuelan national team, later coach, international judge, and administrator. At the sport level, she received various distinctions. Internationally, she received in 2006 the Gold Medal of Honor given by the International Council of Health, Physical Education, Recreation, and Dance, ICHPR. And in 2013, a member of honor of the World Association of Sport Management, invited professor at the Universidad Autónoma de Nuevo León, Mexico, West Germany University, USA, and various other national universities in Venezuela. She is currently advisor of the Ministry of Education for the national training programs for teachers in service in the areas of English as foreign language and physical education, reviewer of Quality Physical Education Project by UNESCO. Responsibilities the international organizations are: Madam is the president of the International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, IPASCOE 2013-21, treasurer of WASM, World Association for Sport Management 2016-21, vice president of the International Society for Comparative Studies in Physical Education and Sport 2008-21, XP chair of the ICSP 2008-12, editorial board member 2008-16, board member 2012-20, founder member of the Latin American Sport Management Association 2009-15, former secretary of the Latin American Association for Social Cultural Studies. Madam, indeed, we are blessed and honored. सारे participants ये बताना चाहती हूँ, रोजा मैडम प्रेसिडेंट हैं जो इंटरनेशनल एसोसिएशन है फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट्स महिलाओं का, और मैडम का योगदान बहुत ज्यादा रहा है। और अभी हम जो देख रहे हैं हमारी जो ये जो पी प्रोग्राम इतना उच्च स्तर पर हुआ है, इससे मैडम का बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है। So on behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, warm welcome to our dignified speaker, Madam Rosa Lopez D'Amico. Ma'am, a warm welcome to you. I also welcome Dr. Usha. May I please interrupt for a moment? Dr. Professor Lopez D'Amico, would you please tell the group what your project is through WASM right now? This is historical. Yeah. You're going to speak now? Yes. Sure. Well, yes, we are working on a book that will be a classic manual of sport management, but written in Spanish. And the authors are classic writers. I mean, the ones who have written the most, but they are not known in Spanish. So we are going through that project that has taken like 2 years to go ahead. And I mean, we are very excited. That's why Darlene mentions this. Thank you. Thank you, darling. Madam, एक
वर्ल्ड एसोसिएशन स्पोर्ट मैनेजमेंट किताब निकाल रही थी जो कि स्पेनिश में है। इसमें जो है हम देख रहे हैं कि जो राइटर्स हैं वो लोग काफी जाने माने, लेकिन वो ज्यादातर लोगों को पता नहीं चला है। इसलिए मैडम का दोबारा बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन उस भाग में भी रहा है। तो हमें कई चीजों के बारे में मालूम नहीं पड़ता है जो हमें डार्लिंग मैम ने बताया। सो डार्लिंग मैम, शुक्रिया। थैंक यू डार्लिंग मैम, थैंक यू रोजा मैम फॉर दिस. I also would like to welcome Claudia, Dr. Claudia from Mexico, Dr. Beatrice, Dr. Yuri, Dr. Kluka, and we also have Dr. Mariam Kashi, Dr. G. Kishore, all my dear PE teachers and coaches. A warm welcome to one and all. आप सबका स्वागत है इस सेशन के लिए। एक बहुत अच्छा सेशन रहेगा क्योंकि मैडम सिर्फ बोलती नहीं है लेकिन उन्होंने बहुत सारी किताबें लिखी है और मैडम एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन को लीड कर रही है जो कि बहुत उच्च स्तर पर है और हमारी आवाजें ऊपर तक पहुंच सकती है। इसके लिए हम देख रहे हैं कि मैडम का जो कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा रहा है। Once again, a warm welcome to one and all. Over to you, Rosa ma'am, for your session, please. Thank you very much for your kind introductory words. And it's always a pleasure, but also a challenge to continue talking about after this introduction, great introduction. I also appreciate my colleagues, my panelists, Dr. Claudia, Dr. Yuri, Dr. Darlene, Dr. Beatrice, Dr. Marian, and Dr. Usha. Thank you very much for being part and of this session. Now, I would like to start with questions to all those, to the participants, and of course to the panelists. And thank you very much to all the participants who are ready to listen to what I have to share. But I also want to know your perspectives before I start talking. So please, Pranesh, could we have the questions? मैडम अभी आप लोगों को कुछ प्रश्न पूछेंगी। मैडम सेशन स्टार्ट करने से पहले आप क्या जानते हैं, आपका जो आपका ओपिनियन क्या है उसके बारे में जानकारी लें। इसलिए मैडम ने कुछ प्रश्न अभी डाले तो मैं प्रश्नों को अभी हिंदी में ट्रांसलेट कराऊंगी, लेकिन आप जरूर इसमें आपने स्क्रीन देखा ही होगा, उसमें आपको टिक करना है। आई एम हैप्पी। पहला प्रश्न यह है कि क्या आप लोगों को लगता है कि महिलाओं को खेलों में भाग लेने का अधिकार है कि नहीं। दूसरा है कि आपको क्या लगता है महिलाएं खेल में भाग ले सके। तीसरा है कि आपको क्या लगता है कि शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम महिलाओं या हम बोलते लड़कियों के लिए अच्छा है कि नहीं। और जो चौथा है, आप खेल जगत में भाग लेने के लिए आप महिलाओं को प्रोत्साहित करेंगे कि नहीं। इसमें आपको ये जवाब देना है। शुक्रिया, आप में से काफी लोग कर रहे हैं तो आप प्लीज जल्दी इसको करना आपको। Okay, I think we already have time for everybody to answer. So the first question is, do you believe women have the right to participate in sport? 100% yes. Do you believe women can participate in sport? 100% yes. Do you think physical education class is good for girls? 100% yes. And will you encourage girls to participate in sport? 99% yes. So my challenge will be to convince this 1% that said no, that it is a yes, okay? That we should encourage all girls to participate in sport. Thank you very much for participating in this. And this gives an introduction to what we are going to talk today about women in sport and physical education, okay? So now, Pranesh, if you allow me to share, yes, the screen, and thank you very much to you all for participating in answering the questions, okay? So now, as Dr. Usha introduced me, I come from the association, International Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, and my topic relates particularly to that one. And even though you might have heard about many aspects related to the benefits of physical education and sport, there are still many gaps and doubts about it. So I will try to speak a little bit what's going on internationally and what policies are there.
Do you want me to translate this? अभी देख रहे हैं आप, इसमें लिखा है कि प्रोफेसर रोजा मैम अपना बताएंगी. अच्छा, okay, yes ma'am, please go ahead. I'll go to the next because I don't think it's required there. Okay, so in the outline, we will speak about women in society, then documents and action about gender equity, physical education, quality physical education, we call QPE, gender and sport, women's part organization, and final comments. अभी आप I देख रहे have to हैं say, क्या जैसे दिस मैम Yes. मैम जो कवर करेंगी टॉपिक है समाज में महिलाओं का जो स्थान है, और हम देखते हैं कि जो जेंडर डिफरेंसेस माने लिंग समानता के बारे में, उनके बारे में करेंगे, और क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन से गुणवत्ता शारीरिक शिक्षा के बारे में, और मैडम का जो एरिया स्पेशलाइजेशन रहा है कि हम देखते हैं लड़की लड़कों में क्या जो फर्क है, लिंग एवं खेल, फिर महिला संगठन के बारे में, और बाद में मैडम अपना लास्ट कमेंट देंगे. यस मैम. So I have to say that I appreciate the work that Dr. Usha did to translate this, so it's easier for you to follow the slides. So, some facts about women's situation in history, okay? So, Rosa, you need to unmute, please. Rosa, you need to unmute. Rosa, you need to unmute, please. Rosa, unmute. You need to unmute, please. Unmute, yes. please. Unmute. Yes, can you hear me? Yes, yes. Ma'am, the previous one we did not hear. We did not hear the previous one. Okay, so we'll go to the previous slide. Sorry. I don't know how it happened. It's okay, ma'am. Okay, so I have to say that I want to... Ma'am, can you go to the previous slide, please? Ma'am, can you go to the first slide? Yes, here. No, first slide. Before this? Yes, yes, ma'am. No? Yes. Please start from... No, ma'am. Next, second, next. Yes, no. Yes. Third slide. Yes, that's where we were. Yes. Okay. So, there are some facts that are important to understand about women's situation in history. And while I'm not going to go further in history, I just want to highlight some comments. So, for example, in the 17th century, some started to condemn women's violence because in the past it was believed that women was a property of the state, okay? So that is just in the 17th century when that started to be questioned, okay? Women used to be considered legally, moral, and socially as inferior than men, so to have a position lower than men, okay? In the mid-20th century, particularly at the end, some sanctions started to be applied to men who mistreated women, either physically or psychological, okay? So it's just by mid-century, and in many places, even still now, it is questioned whether women, how they are treated, we call violence, okay? Ma'am, could I explain, ma'am? Could I just translate that, please? Yes, Right. sorry. Ma'am, the previous one, please. Yes. अभी मैम बताती कि जो 17 सदी में देखा गया कि काफी महिलाओं पे हिंसा चल रहा था, तो इसमें इनके लिए बहुत मुश्किल पड़ रहा था. महिलाओं को उन्होंने सोचा कि कोई वस्तु या राज्य की संपत्ति नहीं है, इसलिए कई लोग इसकी निंदा करने शुरू किए. और ये भी देखा गया कि महिलाओं की जो स्टेटस था वो बिल्कुल वो पुरुषों से भी सामाजिक तौर पे और नैतिक तौर पे पुरुषों के से नीचे था. और ये भी बताया गया बाद में जब 20वीं सदी में कई लोगों ने कई जो मध्य विशेष रूप से देखा गया कुछ प्रतिबंध उन पुरुषों पर लागू किए गए जो कि घर के अंदर या घर के बाहर महिलाओं पर शारीरिक या मनोवैज्ञानिक हिंसा करते थे, उन पे कुछ प्रतिबंध लगाया गया. तो इस तरह से देख रहे थे कि जैसे हम शुरू से देख रहे हैं कि हिंसा हो रहा था, लेकिन उसके बाद में लोगों ने उसमें उसके आगे आवाज उठाना शुरू किया, तो काफी बदलाव आ रहा है. लेकिन ये भी देख रहे हैं कि अभी भी आजकल हम देख रहे हैं कि कई जगह हिंसा अभी भी चल रही है.
और महिलाओं को वो स्तर नहीं दिया जाता है जो कि उनको देना चाहिए. Yes, ma'am. So as you can see from this slide, it's historically women has been mistreated, okay, in society. So this mistreatment has become collective, a collective behavior, and it is present in all spheres of society. And besides that, it establishes codes of silence and limits, and make it understand in quotation mark that it is normal. Discrimination makes no difference between social, economical, and cultural classes, and wherever you are in the world. I mean, it does happen. And stereotypes and the creation of judgment are the base on social prejudice. अभी ये देखा गया कि मैम ये बता रही थी कि जो भेदभावपूर्ण दुराचार है ये सामाजिक सामूहिक तौर पे सब मिलके जो वैसे एक समाज का व्यवहार बन गया. तो इसलिए क्या हो गया, समाज ये सारे ये यहाँ नहीं है, काफी समाजों में ये मौजूद है. और ये भी देखा गया कि भेदभाव सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक वर्ग के बीच में कोई अंतर नहीं दिखता, हर जगह होता है. और रूढ़ियां और निर्णय मूल्यों का निर्माण सामाजिक पूर्वग्रहों पर आधारित है, क्योंकि इसीलिए हम देख रहे हैं कि कई चीजों में बहुत मुश्किलें सारी हम देख रहे हैं. कई महिलाएं इसके लिए लड़ रहे हैं कि किस तरह से बदलाव लाया जाए, उसके बारे में मैडम जानकारी दे रही है. और सारा ये अनुसंधान बेस्ड है, रिसर्च बेस्ड है. यस मैम. So it is very important to have this as a context and a background in order to understand that it has been social embedded, that mistreatment that women have suffered throughout society, and the creation of stereotypes. Okay, so but who does that? We human beings, and we are part of society. Society is not outside, it is us. Okay. ये मैम ये भी बोल रही थी कि हम जब बताए समाज किससे बनता है, समाज तो हम है, इसमें हम पुरुष होते हैं, नारी दोनों होते हैं. लेकिन जब हम समाज में, तो ऐसा क्यों भेदभाव क्यों है? लेकिन फिर भी हम देख रहे हैं कि अभी ये समाज में ऐसा भेदभाव है, ये एक सामूहिक व्यवहार के तौर पे माना गया है और लोग उसी को लेके चलते हैं. यस मैम. So now let's talk about this benchmark, this important event that has been relevant to make it for women to be empowered in society. But I will just pay much more attention to those aspects that are related with women and sport. So of course, I mean, anything that is related with human rights has to start with the 1948 Declaration of Human Rights. Okay, it is universal and all countries have signed, and if you are not aware of it, I found it in Hindi and you can read it in there. Okay, in 1948. Then 1949 IAPESCABE was created, and this is one element of relevance because it was a way to push and to make the studies at academic level to be there to support all those programs that started to be created at university, at institutes, and to give a platform for women in many places of the world. And of course, 1975, which was the first UN Women's World Conference, that by chance took place in Mexico, Gloria. तो अभी अब देख रहे हैं कि मैं बता रही थी, ये हिंदी में दे चुके हैं, मानव अधिकारों की जो देख रहे हैं कि जो घोषणा की थी 1948 में था, लेकिन उसमें ये लिया गया, इसके बारे में चर्चा हुई, क्योंकि और इसमें सबसे बड़ा इनका जो योगदान रहा है 1949 में ही ये IAPESCABE जो आप देख रहे हैं मैडम जिसकी प्रेसिडेंट है, उसकी जो शुरुआत उस समय हुई, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म था जहाँ महिलाओं की हम बोलते हैं लड़कियां, महिलाओं के लिए, उनके लिए वो अपनी आवाज उठाने के लिए एक प्लेटफॉर्म तरीका से हुआ. इसलिए वो अभी आप ये देखते हैं, इनका तो हर राज्य में इनका जो ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव्स है, जो अपना जो भी प्रॉब्लम्स होती, जो समस्या होती है स्त्रियों पे, जो महिलाओं पे खेल के द्वारा वो इस पे वो ला सकते थे. तब ये जो IAPESCABE हम बोलते हैं, इंटरनेशनल फिजिकल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड वुमेन, ये इनका योगदान बहुत ज्यादा रहा. और ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म रहा जहाँ महिलाओं की आवाज को, महिलाओं की समस्या को आगे रख सके, उसके लिए वो लोग एक जंग टाइप का आगे कर सके,
जिसे काफी समस्या हल कर सकते थे। और 1975 में देखा कि जो पहला यूनाइटेड नेशंस का जो विमेन का महिलाओं का वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस हुआ था वो मेक्सिको में था। यस मैम। Okay, so now going to the International Charter of Physical Education, Physical Activity and Sport. So it is in 1978 that we, the ones who work in physical education world, started to have this very important document that was the fundamental letter. We call it in many places letter, document, charter, related with the rights to participate in physical education and sport. The charter was amended in 1991, and in 2015 it was reviewed and presented. ICSPE has a very strong, I would say, sprint there to make it possible. ICSPE did lots of work, and we worked together with several organizations to make it happen. And it's not long, it just has 12 articles, and I also found it in Hindi, so you can read it, okay? इसमें ये देर का ये हिंदी में भी दिया है, क्योंकि यूनेस्को का जो महासम्मेलन हुआ था, यहाँ इन्होंने बताया कि यूनाइटेड नेशन के घोषणा पत्र में जनता ने बुनियादी मानवाधिकार में मनुष्य के आत्म सम्मान तथा महत्व में अपने विश्वास का ऐलान किया है कि सामाजिक प्रगति और जीवन को बेहतर मानकों को प्रोत्साहित करने का और अपनी प्रतिबद्धता की पुष्टि की है। यह भी याद रखते हुए कि मानवाधिकार के सार्वभौम घोषणा पत्र के अनुसार हर एक मनुष्य नस्ल, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, राजनीति, अन्य विचारों, राष्ट्रीय अथवा सामाजिक मूल, संपत्ति, जन्म या दूसरी सामाजिक स्थितियों के आधार पर किसी भेदभाव के बिना घोषणा पत्र में दर्ज सभी प्रकार के अधिकारों और स्वतंत्रता का हकदार है। इस विश्वास के साथ कि मानव अधिकारों को व्यवहार में लाने की शर्त यह है कि हर एक व्यक्ति को अपनी शारीरिक, मानसिक और सामाजिक तंदुरुस्ती और क्षमताएं विकसित करने तथा उन्हें बनाए रखने की सुरक्षा और आजादी भी है। Yes, ma'am. I just write out. Thank you. Thank you. No. So participation in physical education and sport is a human right. Okay. So all girls, boys are entitled to participate in a class with physical education, but also in sport without any discrimination. Okay? So we have to understand the relevance of physical education and sport for the well-being and health of people all over. अभी मैम ने बताया कि ये जो अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार में ये बताया गया कि जो मानव अधिकार का जन्म है शारीरिक शिक्षा, शारीरिक गतिविधि, खेल में निःशुल्क और सार्वभौमिक पहुंच, भेदभाव के बिना प्रवेश, लिंग, विकलता आदि मानव विकास, स्वास्थ्य के लिए योगदान की बढ़ती समझ है, और वो है शिक्षा। तो इसमें बताया कि जो है खेल है वो मानव अधिकार के लिए, तो आप किसी को उसमें से अलग उसको सबको उसमें शामिल होने का देना चाहिए, क्योंकि ये एक अधिकार है। तो ये जब अधिकार दिया गया क्यों इसमें नहीं, और आप लास्ट जब देखते हैं कि शिक्षा एक ऐसी चीज है जो कि मानव विकास, स्वास्थ्य के लिए योगदान को बढ़ाने में समझ देती है। तो इसीलिए पहले भी मैंने बताया मानसिक तौर पे, शारीरिक तौर पे ये बहुत जरूरी है हमें समझना, और इसके बारे में हमें ज्यादा जानकारी अभी है नहीं वैसे, इसीलिए अभी हमको इसके बारे में जानकारी लेके बच्चों को और लोगों को भी समझाना जरूरी है। यस। Okay, we continue with some important hallmarks in this process to make women participate in physical education and sport. And it is in 1981, which is not long far. I know many people here are young, but still this is not that far behind, that 2 females were co-opted as IOC members. And in 1990, the first female elected to the IOC executive board, just in 1990, okay? That by chance was a Venezuelan. She passed away last year. In 1994 was created another organization, which is Women's Sport International, and in that same year took place the World Conference
on Women and Sport with the signing of the Brighton Declaration. And this marked the starting of another group that is called the International Working Group on Women and Sport, IWG, that also runs for Congress every 4 years. अभी जो इपास्कवे और पूरा इन लोगों ने जो महिलाओं ने जो जंग लिया उसका ये निकला कि लास्ट में जो आउटकम है ये है कि 2 महिलाओं को आईओसी में मेंबर्स करके कॉप्ट किया गया 1981 में और 1990 में देखा कि पहला जो महिला की जो आईओसी एग्जीक्यूटिव बोर्ड में आई और 1994 में इन्होंने क्या किया विमेन स्पोर्ट्स इंटरनेशनल WSI करके एक ऑर्गेनाइजेशन कराया जो जहां पर की जो दुनिया का जो महासम्मेलन कॉन्फ्रेंस था और वहां पे इन्होंने ब्रिटन डिक्लेरेशन किया और 1995 में इन्होंने दूसरा एक वर्किंग ग्रुप आप देखेंगे आप कभी भी गूगल सर्च करें IWG होती है जो IOC सबके साथ मिली होती है वो उसको बोलते हैं इंटरनेशनल वर्किंग ग्रुप ऑन विमेन एंड स्पोर्ट और जो कि हर 4 साल में इनका कांग्रेस चलता है। तो आप देखते हैं कि शुरू में जो जंग उसका किया जहां महिलाओं को आके जैसे आप पहले देखते पहले ओलंपिक्स में महिलाएं खेल के पास आ भी नहीं सकती थी लेकिन आप देखिए अब कितना बदलाव आ चुका है। यस So perhaps I would say that these have been an event that really pushed forward to make it real, to have women, the women agenda in many social areas, in many areas which in the past was unthinkable too. So first, the development goals, the Millennium Development Goals in the year 2000, they incorporated among their goals gender empowerment, gender equality. In 2015, then because all the ones were not achieved, then it was created the Sustainable Development Goals. That are the ones you can see in the bottom of the slides. And in there, gender equality is one of the objectives. I mean, it's still there for the next 15 years, and this is what we call the 2030 agenda. So it is a must, okay, that gender equality has to be achieved. And then we have the United Nations Congress that took place in 1995, but then afterwards it has continued and there is a follow-up to what is called the Beijing Platform, okay? मैं बता रही कि 2000 में जो है मिलियन डेवलपमेंट गोल्स माने सहस्त्राब्दी विकास लक्ष्य ये 15 वर्षों के बाद इस विषय का जो विकास लक्ष्य के रूप में हम देख रहे हैं कि इसमें एक गैप माने अंतर था जिसमें लिंग समानता माने जेंडर जहाँ महिलाएं और जो पुरुष है उनमें उनके लिए उनको एक समान से देखना इसलिए बोलते हैं लिंग समानता वो 15 वर्षों के सतत विकास लक्ष्य में उद्देश्य में से एक है। वो एक बहुत एक बड़ा माइलस्टोन है जहां हम लोग मैं बोलती लड़ने का नहीं है जहां महिलाओं को भी पुरुषों के समान देने के लिए ये एक सस्टेनेबल गोल में एक गोल है और महिलाओं पर जो ये कांग्रेस है जो महासम्मेलन है ये 1995 बोला लेकिन उसके बाद में बीजिंग जो 2000 से के बाद लगातार वो कांग्रेस चल रही है कहीं रुका नहीं। आप देख रहे हैं 2000 2005 10 15 20 ये चलता आ रहा है लेकिन ये सब में सिर्फ एक कांग्रेस नहीं है। आप देखेंगे बहुत जगह ऐसे है ये जो जंग हुआ है जहां लिंग समानता नहीं है तो कई ऑर्गेनाइजेशंस में अपने अपने फेडरेशन से उनको महिलाओं को भी स्थान मिल रहा है और कई जगह उन्होंने बोला कि कंपलसरी है उनको देना चाहिए। इस तरह से एक बदलाव आ चुका है। यस Okay, so other important elements are related with the position the IOC has played. And it is in 1996, after the Beijing Platform, the Beijing Congress, that the promotion of female sport is added to the Olympic Charter. Okay, and the IOC World Conference on Women and Sport was celebrated in 1996, and it continues being celebrated. Minute 4, which is the ministers and officials of physical education and sport, recommended that women's sport and physical education should have an observatory.
and that was planned in 2004, but it was not achieved. And there has been lately some documents that I will mention later between UN Women and IOC in order to strengthen the promotion of girls and women's empowerment. Trust, yes. मैं बताती कि 1996 में पहली बार था जहां महिलाओं या लड़कियों के खेल के लिए प्रोत्साहन देने का वो ओलंपिक चार्टर में आया, उसको भी उसमें लागू किया। और ये तब था जब पहला जो कॉन्फ्रेंस था आईओसी की, जो दुनिया का महासम्मेलन था जो महिलाओं का और खेल का था, वो अभी भी उस समय से चलता आ रहा है। और 2004 में जो मैडम बोलती है मिनिप्स माने जो मिनिस्टर्स और जो सीनियर ऑफिशियल्स होते हैं, हमें इसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमें इस सब की जानकारी जरूरी है। हम सब पढ़ाते हैं लेकिन हमको मालूम होना चाहिए शारीरिक शिक्षा का, इसका हिस्ट्री क्या, पास्ट क्या है, आगे क्या है, हमारी आवाज हम कैसे पहुंचा सकते, क्या क्या ये मिनिप्स पे क्या होती है। हर जो राज्य है वहाँ उनके जो मिनिस्टर है, जो ऑफिशियल्स जो शारीरिक शिक्षा या खेल देखते हैं, वो उसमें उस सम्मेलन में जाते हैं और ये लोग सब मिलके अपना पूरा ड्राफ्ट करते हैं डॉक्यूमेंट्स में, सब मिलके अपना योगदान देते हैं। तो इसमें बताया कि महिलाओं खेल और जो शारीरिक शिक्षा, इसके लिए एक ऑब्जर्वेटरी टाइप की बनानी चाहिए, वो होनी चाहिए यूनेस्को से पार्टनरशिप करके, लेकिन वो उस समय हो नहीं पाया। और 2004 के बाद 10 साल बाद 2014 में यूएन और आईओसी ने दोनों मिलकर एक एग्रीमेंट किया, एक बनाया कि हम लोगों को कुछ करना चाहिए जहां लड़कियों और महिलाओं को हम कैसे एम्पावर कर सकते हैं खेल के द्वारा। और 2015 में इंटरनेशनल चार्टर जो फिजिकल एजुकेशन स्पोर्ट का, उसमें उन लोगों ने ये महिलाओं और लड़कियों के लिए खेल एक अलग विभाग ही उसमें डाल दिया है। यस मैम। Okay, so in terms of quality physical education that was mentioned in the previous slides, in 2015, there has been several publications that UNESCO has done. And just to make clear, there are some guidelines in there. This image is one of those. But the most important points related with QPE, what are the indicators? The indicators are inclusion, gender, quality, curriculum flexibility, community, professional training, and development of supported aspects in physical education. अभी आप देखेंगे ये जो 2015 में जो क्वालिटी, क्योंकि हम लोग बोलते हैं QPE क्या है, ये क्वालिटी जो फिजिकल एजुकेशन जो बोलते हैं, शारीरिक शिक्षा की गुणवत्ता था, ये बहुत इसकी जो नीति निर्माताओं के लिए 2015 में हुई थी। और इसमें इन लोगों ने कई फैक्टर्स बोले। सबसे पहला है कि समावेश, इंक्लूजन, किसी को छोड़ना नहीं है, सबको उसमें शामिल करना है, किसी को हमें बाहर नहीं रखना है। दूसरी बात है लिंग मुद्दे को बहुत ज्यादा रखा है, क्योंकि वो भी है कि हम किसी को पीछे ना छोड़े। और दूसरा है कि हमारी जो हम जब पढ़ाते हैं तो उसमें कुछ क्वालिटी जो हम बोलते हैं गुणवत्ता आश्वासन होनी चाहिए। और हम जो पाठ्यक्रम बता रहे हैं उसको ऐसा होना चाहिए कि हमको जैसे सिचुएशन के मुताबिक हम उसको बदल सकते हैं और उसको अपना सकते हैं, जहां हमें लगता है कि सही तरह से हम उनको शारीरिक गतिविधियां कराएं। और हमें जरूरी है कि सामुदायिक भागीदारी, क्योंकि हम लोग सिर्फ स्कूल तक ना छोड़े, हमें समाज में, हम अपने कम्युनिटी में हम क्या कर सकते हैं। और दूसरा है कि हमें ये देखना है कि कौन कौन सा ऐसा जो एस्पेक्ट्स है, जैसे कि पेशेवर प्रशिक्षण है, जो कौन सा चीज है जो हमको शारीरिक शिक्षा कराने में हमें और अच्छा कर सकता है। तो ये सारे मिलके अगर हो तभी वो ये गाइडलाइंस में, नीति निर्माताओं के दिशा निर्देश में 2015 में दिया गया है। So, whenever you want to check if your program is following the indicators of quality physical education, just check these indicators. अगर आप देखना चाहते हैं कि आपने जो शारीरिक शिक्षा पाठ्यक्रम दिया है वो सही है कि नहीं, तो अगर आपको चेक करना है तो आप ये सारी जो 5 पॉइंट्स है उस पे देखिए। अगर इसमें से अगर आपने कुछ चीजें आपको लग रहा है छूट रही है, तो हमें याद रखना चाहिए कि हमारी वो सही नहीं है, हमारी जो शारीरिक शिक्षा गुणवत्ता सही नहीं है,
क्योंकि दुनिया में ये लोग पूरे शारीरिक शिक्षा गुणवत्ता पे ही ध्यान दे रहे हैं, ये नहीं कि जो हम क्लास ले रहे हैं इसलिए ये हमारे लिए ये सब नई सीख है। यस मैम। Okay, other and now until 20 other documents which are important, and I will mention the Kazan Action Plan that is from MINEPS 6, in which one of the 5 actions that is agreed that should be taken is to conduct the study to create the Observatory for Women's Sport, Physical Education, and Physical Activity. You can check that the word physical activity was included here in this in the Kazan Action Plan, because in the past, in the 2004 suggestion, it didn't happen. So you might ask me, so why will it happen now? Yes, a country has already agreed to have the observatory, and they are in that process. But also, the IOC, the UN, has done in the last year important documents that are connected with women's empowerment, and those are the titles that you can check if you want to know more. Unfortunately, what I noticed while I was doing my research is that I couldn't find any of them in Hindi. मैम ये बताना चाहती हूँ, हमने 2004 में देखा था कि एक मिनिप्स में इन्होंने सजेस्ट किया था कि हमें एक ऑब्जर्वेटरी होनी चाहिए, लेकिन वो 2017 में जाके कजान एक्शन प्लान, मैडम पिछले सेशन में बात कर चुकी थी, उसमें जो 5 एक्शन है उसमें से एक ऐसा है कि ये लोग एक ऑब्जर्वेटरी बनाने के लिए तैयार हो गए हैं, जो महिलाओं के लिए है, खेल के लिए है, शारीरिक शिक्षा के लिए और शारीरिक गतिविधि के लिए। और 2018 में आईओसी ने ये जो लिंग समानता है उसमें एक प्रोजेक्ट शुरू किया है, और 2020 और में आप देखेंगे 2 ये और पब्लिकेशंस आई हैं जहां इन्होंने दिया है कि जो महिलाओं का जो खेल है उसमें एक समानता हो, उसके बारे में एक फ्रेमवर्क दिया है। और दूसरा बताया कोविड में जो है वो स्त्रियों के लिए, लड़कियों के लिए और खेल में हम कैसे वापस खेल में कैसे आ सकते हैं, इसके बारे में सारी मटेरियल अवेलेबल है। तो अब जब मैडम इतना बता रही, कहती है अगर आपको इसके बारे में कुछ जानकारी चाहिए, आप गूगल में जाके सर्च करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी इसमें। So gender equity, after we talk about all the documents and the actions, and these are just a bit, there are many others that has been done in all the previous year, okay? So what is gender equity? It's allocating resources, programs, decision-making fairly to both males and females without any discrimination on the basis of their sex, okay? It doesn't mean to treat them in a way that is the same, because equal. It means justice, it means fairness to all. We all like to be treated in a fair way, so we have to treat the others in the way we want to be treated, okay? So it does not mean giving less to men and women's team, because this happens still in the world of the same sport. Women receive less than men financial awards or media attention. ये जेंडर इक्विटी, लिंग समानता, ये इक्वालिटी और ये इक्विटी दोनों फर्क एक जैसा नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ये इसमें ये नहीं कि इक्विटी माने आप जैसे हम यहाँ एक एग्जाम्पल भी दें कि कुछ भी उसकी सुविधाएं हैं, वो क्या सुविधा हम चाहते हैं या किसी तरह का निर्णय लेना है, तो उसमें आप महिला और जो पुरुष है दोनों को आप देंगे, लेकिन आप इसमें कभी उसमें अंतर नहीं दिखाएंगे। और इसका मतलब ये तो नहीं है कि आप स्त्री और पुरुष में एक ही तरह लाओ, उसको बोलते हैं समानता नहीं है, इसका मतलब समानता नहीं, इसका मतलब है कि आप उनको सही मौका दीजिए कि वो क्या चाहते हैं, उनको आप जस्टिस देंगे। इसमें है कि आप लोग ये नहीं दिखाना है क्योंकि स्त्रियां हैं, महिलाएं, तो उनको हम उनको अलग तरीके से उनको जो है उनको जो मिलना है वो देंगे। अभी आप देख रहे हैं जैसे कि अवार्ड मिलता है, या एग्जाम्पल दे दूं, अभी क्रिकेट पे भी देखा जाए तो पुरुष वर्ग की जो है उनको ज्यादा जो हम देखते हैं फाइनेंशियल जो उनको मिलता है अवार्ड, वो थोड़ा अलग होता है, स्त्रियों का अलग होता है, इसमें काफी लोग आगे बढ़े। तो ये मीडिया में आप देखेंगे कई बार पुरुष वर्ग को मिलाता है और महिलाओं को वो आगे नहीं मिल पाता,
और टीम में भी जब जाते हैं ऐसे सब कई चीजें। तो ये क्या बोलते हैं, जो उनको चाहिए, इसका मतलब है कि निष्पक्षता नहीं होनी चाहिए। वो लोग क्या चाहते, समानता इस तरह से चाहते कि उन्हें कम मत दो, उनको जितना है वो जो चाहते उसके मुताबिक दोगे तभी आ सकता है। तो आप, मेरे को लगता है आपको अंतर समझ में आ गया, इक्विटी और इक्वालिटी दोनों एक जैसा नहीं है। यस मैम। Okay, so all women in all corners of the world, they struggle, okay, in all societies. Some people believe that in other places it's easier than the others. There has been several struggles in all corners of the world. अभी आप ये पिक्चर जब देख रहे हैं, बोल रहे हैं कि काफी पूरी दुनिया में देखेंगे बहुत सारी महिलाएं जिनको बहुत ज्यादा समस्या होती है और उस समस्या का उनको स्ट्रगल को फेस करना पड़ता है। तो आप इधर देख ही रहे हैं, जैसे व्हील चेयर में है, नहीं तो मुस्लिम्स है, उनका जो ड्रेस जो रहते कोड है, तो आप देखेंगे महिलाओं को बहुत सारा है। तो इतना आसान नहीं है हमको जब आगे आना, तो इनको बहुत सारी समस्याएं। तो ये लोग ये काफी देखते हैं कि ये लोग अब एक ये जंग कैसे लड़के आगे कैसे आ रहे हैं। यस मैम। So, the stereotypes, and what I'm going to say here is in all the references, okay, that you find at the bottom, and you can explore much more. But there are fewer women than men in management positions. There are harmful stereotypes that continues to limit opportunities for other women to communicate genuine personal differences. There's underreporting of women's sport printed media, and that of course contributes that the audience in general, they don't know much about the achievement of women, and of course the low number of judges and coaches. अभी ये स्टडी आप देख रहे हैं क्लुका और गॉसल मैडम, इन लोग का रोजा मैडम का भी, इन सब का एक स्टडी है। उसके मुताबिक ये देखा गया महिलाएं बहुत कम, महिलाएं पुरुष वर्ग के सामान्य में जो टॉप पोजीशन से मैनेज पोजीशंस पे 20% से भी कम है। तो इसमें कई बार दिखा है कि स्त्रियों महिलाओं को मौका नहीं मिलता, उनको आगे ऊपर आने का, जो ऊपर पोजीशन वो नीचे रहते हैं, लेकिन ऊपर की पोजीशन तक पहुंचना मुश्किल पड़ता है। और आप देखेंगे प्रिंट मीडिया, पत्र में देखिए या आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या देखेंगे तो ज्यादातर इन लोगों का, महिलाओं का ज्यादा अच्छी तरह से रिपोर्टिंग होता नहीं है, अगर होता तो भी कम होता है। कई चीजें उनके बारे में आगे आता ही नहीं है सबसे। और दूसरी सबसे जो लाखिरी है ये है कि आप देखेंगे कितने हैं जो कंपटीशन में, कितने विमेन महिला कोचेस कितनी हैं, महिला जजेस कितनी हैं, महिला फेडरेशन पोजीशंस में कितनी हैं, आप देखेंगे काफी में बहुत कम है। यस मैम। So sometimes in some places they said it's minorities because they are minorities, but it is not true. And minorities, it depends on where we are. Like for example, in this moment, in this session, I am a minority compared because I don't speak Hindi, okay? But I can be a minority if I am in a session or that everybody speaks and I don't speak, okay? Or if you're in a physical education class in which the PE teacher only focuses on sport, and the kids that are not good in sport might not participate. So again, I mean, we have to eradicate that idea like minorities have no right. Everybody has the right, because at any point in history, you will be a minority, okay? अभी बता रहे माइनॉरिटी माने अल्पसंख्यक। उदाहरण के लिए जहां हम स्थित है, क्या आपको लगता है उसके आधार पर कोई भी अल्पसंख्यक समूह का हिस्सा हो सकता है? जैसे मैडम बता रही कि मैडम को हिंदी बोलना नहीं आता, तो अभी मैडम या 3-4 लोग होंगे जिनको हिंदी नहीं आता और सबको हिंदी आता, तो आप क्या उनको अल्पसंख्यक बोलेंगे? तो अगर आप केवल एक ही है जो बाहरों का सम्मेलन में सुनते हैं, तो अगर इसमें ये बहुत जरूरी कि हम जब बोलते हैं तो इसमें शारीरिक शिक्षा में क्लास में भी जब हम पढ़ाते हैं या थोड़े लोगों को, तो क्या आप उसको ही बोलेंगे? तो इसमें अल्पसंख्यक, क्योंकि महिलाएं हैं वो ज्यादा आ नहीं पा रही है, क्या आप उसको अल्पसंख्यक बोले? ये सही नहीं है। यस मैम। Okay, so discrimination also is connected with all areas. So we have seen discrimination by religious belief, technological advantage, the color of the skin, country of origin, profession, political reasons. All these we have also seen in sport.
hyperandrogenism case, mistreatment of athletes because of their biological condition. So these are just some examples, but for you to be aware that in sport we don't skate of that. And it's not just of women, but all the other sort of discrimination in which sometimes women are discriminated double or twice. भेदभाव हो रहा हम देख रहे हैं खेल जगत में नहीं, वैसे भी देखा जाए धार्मिक विश्वास पे हो सकता है, तकनीकी पे हो सकता है, लोगों की त्वचा के रंग पे हो सकता है, व्यवसाय, राजनीतिकरण, किसी भी तरह से भेदभाव हो सकता है। लेकिन ये भेदभाव बिल्कुल ठीक नहीं है। अभी आप मैडम ये हाइपर एंड्रोजिनिज्म कह रही है, अपना दूती चंद का ही जो हमारी इंडिया ने मैडम अच्छा एग्जाम्पल भी दिया है, क्योंकि इनके लिए अलग कर दिया था। इनको उन्होंने बता दिया ये खेल में भाग नहीं दे सकती क्योंकि इनमें ऑलरेडी इनका जो हार्मोन है, जो मेल हार्मोन है, वो थोड़ा ज्यादा है, जिसकी वजह से वो महिला नहीं है करके ऐसा एक आ गया जिसमें महिला के साथ कंपटीशन नहीं कर सकती, वो कोर्ट में लड़के आ गए। लेकिन उसके साथ ही आप कैस्टर सेमेनिया का भी यही स्थिति है। तो हम देख रहे हैं बहुत जगह आ रहा है जहाँ पुरुष भी भेदभाव में उनको भी होता है, लेकिन ये हमेशा देखा गया है कि जो भेदभाव है उसमें ज्यादा समस्या महिला को आ रही है पुरुष वर्ग से ज्यादा। यस मैम। This is another example of discrimination because of their religious belief. Continue, Yusha. ये आप देखेंगे 2011 का ईरानियन की विमेन्स जो फुटबॉल टीम थी, आप देखेंगे पहले इन लोगों को बोला गया कि जब तक आप अपने उसमें, इन्होंने ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया था, लेकिन इनका जो आप वेशभूषा देखते हैं उनके लिए एक तो है इनमें इनका जो कल्चर है उसके मुताबिक ये वो खिलाफ रहता है जब वो दूसरा ड्रेस नहीं पहन पाते। लेकिन बाद में ये लोग लड़के इसके बाद में फीफा के द्वारा उनको आपको ये जो सर पे जो स्कार्फ बांधना है, इनको पूरा किट के लिए उनका सहमति मिल गई। तो ये देखते हैं कि जो धार्मिक चिन्ह होता है कि नहीं कर पाते, लेकिन बाद में अभी देखा ये भेदभाव से हटा के अभी इनको देखा है कि फीफा में मैचों में धार्मिक चिन्ह वाली हेड कवर भी पहनने की अनुमति मिल चुकी है। Yes, ma'am. Fortunately, this has already been solved because FIFA authorized the wearing of head covers. But 2014, it's just few years ago. We were all alive. This was happening, this sort of discrimination. अभी आप जो भेदभाव देख रहे हैं, ये आप देखिए 2014 है वो तो बिल्कुल पास है। तो आप देख रहे हैं अभी चल रही है सारी। तो कब कितने सालों से लोगों को समस्या हो रही थी, लेकिन अभी जाके हमें 2014 में इनको अनुमति मिली, क्योंकि इनमें धार्मिक जो विश्वास है उसके मुताबिक इनको सर ढकना पड़ता है। लेकिन ये लोग को जो जंग लड़ रहे थे फाइनली 2014 में जाके वो सफल हो पाए। यस मैम। And these, I will just mention briefly, are other sort of declarations that women's organizations have done in the face of discrimination that has been placed internationally with some groups, with some women in particular, and anything that avoids or prohibits women to participate in sport. The groups has been IWG, WSI, that I explained at the beginning, IAPESCABE, Athletics Canada, Women's Sport Foundation from US. अभी देख रहे हैं कि मैं बता रही थी कई जो ऑर्गेनाइजेशन मैंने बताई, IWJ, ये आप जो देख रहे हैं ये पैस्कवे है, WSI है वर्किंग, और WSF है, एथलेटिक्स का, ये सब मिलके ये लोग एक जंग लड़ रहे हैं कि जिनको समस्या है और जो समस्या बाहर लाए और उनके लिए सही नीति दे, वही इनका था। अभी आप देखेंगे इन लोगों ने काफी लिया वेट लिफ्टिंग फेडरेशन पे, इनका जो ड्रेस कोड था, फिर ये जो फुटबॉल का आप देख रहे हैं उसके लिए भी इन लोगों ने काफी जंग लड़ा, बैडमिंटन में भी आई थी। और आप देख रहे हैं कि हमारी दूती चंद के अलावा उसका जैसा ही कास्ट सेमेनिया का एक और प्रॉब्लम है, वो हार्मोन रिलेटेड है। फिर आप देख रहे हैं स्पेशली ह्यूमन ट्रैफिकिंग, माने जो ले जाते हैं बच्चों को, ज्यादातर हम बोलते हैं कि लड़कियां महिला या पुरुष होते हैं, हम बच्चों के बारे में बोलते हैं। तो ये सब में ये हमें पता नहीं चलता है कि लोग बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन ऐसे हैं जो समस्या के लिए वो लोग बढ़ के अपना वो जंग लड़ रहे हैं। तो हमें इसका जो फाइनली जो आउटकम है वो हमको मिल रहा है। इसके पीछे बहुत ज्यादा काम हो रहा है जो ये सारी ऑर्गेनाइजेशन मिलके काम कर रही है। यस मैम। Okay, so in terms of Olympic Games and women's participation, and again we know
all know how it started, and women did not participate in the first Olympic Games of the modern era. And that also reflects what I mentioned to you in my second and third slides related with women in history and how they were perceived, what was their relevance in society. And this is how the participation of women have increased. And this, I would say, is the Summer Olympics. But in the Paralympics, you can see the number in Winter Olympics and Winter Paralympics Games. So you can see, and I'm just referring to women's participation as athletes, okay? If you sit down, you can check in that quotation that in the IOC committees and sport associations, still it hasn't been achieved gender equality. So again, this is a sign of how organizations, in spite of the fact that they have been promoting that, for them themselves, it has been very difficult to change the way how to make more women participate in sport. Perhaps it has been done very softly. So more push is needed. अभी देखिए, अभी महिला जो प्रतियोगिता में भाग ले रही थी, आप देख रहे हैं 1896 में हम देखा कोई थी क्योंकि महिलाओं के लिए वहां उनको अनुमति नहीं थी, लेकिन 1936 में आप देख रहे हैं कि 9% महिला भाग ले। और आप देखेंगे कि 1964 में भी 13 थे, लेकिन 2016 में वो हम देख पाए कि 40-50 से भी नीचे प्रतिशत स्त्रियां महिलाएं भाग ली। और 2016 में आप जो पैरालंपिक्स में देखते हैं कि उसमें थे 35.4, लेकिन आप विंटर ओलंपिक्स अभी भी देखिए, विंटर ओलंपिक्स जो विंटर ओलंपिक गेम्स में 43.3% है, 40% से ऊपर है। लेकिन आप 2018 में देखेंगे वो तो 25% भी नहीं है जो जहां महिलाएं भाग ले रही हैं। तो अभी भी हम देख रहे हैं कि भेदभाव है, जहां वो एक समानता नहीं आ रही है। तो इसमें इन्होंने दूसरी एक बहुत बड़ी बताई थी कि वो IOC कमिटी है और इनको अभी भी लिंग समानता नहीं मिल पाया। इन्होंने देखा कि जो 90 जो मेंबर्स हैं IOC के, उसमें से इनको सिर्फ 22 महिलाएं थे। दैट मीन्स 24.24% महिलाएं थी जो उस वहां तक पहुंच पाई। माने जो फेडरेशंस में थे, प्रेसिडेंट 12 से 2% थे, वाइस प्रेसिडेंट थे। लेकिन आप देखेंगे कितना कम नंबर है, 90 राज्य से जो IOC के, उसमें कितनी कम महिलाएं हैं। तो ये है कि जब तक आप महिलाओं को आगे जो हमें पॉलिसीज या डिसीजन उसमें शामिल नहीं करेंगे, जहां महिला ऊपर नहीं आएंगे, उनका आगे जो हम लिंग समानता वो कैसे हो सकता है खेल विभाग में। यस मैम। So in general, in all countries and cultures, girls and women participate in less physical activity than boys and men, okay? And despite many actions taken, the lack of women in different leadership positions is evident. But I have to say that this is taken as it is very easy to change a social behavior. And it has been taken like this, as it is like in the last 10 years or 20 years, here's an indicator, let's have more women, and out of a sudden it will happen. It won't happen out of the sudden if there is no more emphasis from the society, from the policies in place, because it has been years, centuries, in which women has been considered as inferior. So of course it takes a while, and that's the reason why even nowadays we have the research is indicated that there is lack of female leadership, and this is the most important barrier for more girls and women participating in sports such as coaches, referees, decision maker, etc. अभी हम बता रहे हैं कि जैसे लगभग सभी देशों में देखा गया कि सांस्कृतिक तौर पे जो लड़कियां हैं और महिलाएं वो पुरुष वर्ग के मुताबिक कम ही भाग लेती हैं। लेकिन इसमें हम क्या बोल सकते हैं, क्या कई महिलाएं कम है वो नेतृत्व पोजीशन में आने के लिए, क्या वो कम है? लेकिन कई बार ये होता है कि ये एक उनको मौका नहीं दिया, उनको इसके लिए कभी अवसर नहीं मिला जाता। ये एक हो सकता है। आप देखिए कई जगह जैसे हम बोलते हैं
महिला कोचेस कितने हैं? अभी आप भारत में देखिए महिला कोच कितने हैं, महिला रेफरीज कितने हैं, महिला फेडरेशन में कितने हैं, और कौन कौन डिसीजन वहां महिलाएं कितनी, आप देखेंगे अभी भी बहुत कम है। तो इसमें और दूसरी बात ये क्या है कि जब महिला होती है वो बहुत जल्दी हिंसा के आधारित हो जाती है पुरुष वर्ग के कंपैरिजन में। तो इसमें कई बार वो अपनों को असुरक्षित पाती है। तो इसलिए कई लोग बोलते हैं ये महिलाओं के बस में नहीं है। कई बार आप सुनेंगे भी ये महिलाओं के बस में नहीं है, ये सिर्फ पुरुष कर सकते हैं। तो इसमें एक बदलाव आना जरूरी है। जब तक नहीं आएगा तब हम उसको सामान्य कैसे बोल सकते हैं, हम उनको लिंग समानता कैसे बोल सकते हैं? Yes, ma'am. Okay, so here's some interesting data, and this is what I said is interesting is because last year UN Women has done several activities that are connected with women and sport. UN Women refer to all sectors, but not necessarily sport has been always in their main agenda. But in the last year, it has been evident with some publication. So here are a few, just two of them, in which one, it is indicated that there are gaps in all sectors and in regions of the world related with women's empowerment. And there is one document that relates to sport for generation equality, and it is quite interesting for all the ones who are here, if you haven't been in contact with this one, to have a review and to check how you or your organization can be part of this generation equality framework. It gives some guidance. अभी आप देखेंगे कि ये तो इन्होंने अनुसंधान के बेसिस पे डेटा दिया। तो इसमें लिंग समानता का जो रिपोर्ट है वो महिलाओं के अधिकार का है, जो इसमें 25 साल लगे वो बीजिंग ब्राइटन डिक्लेरेशन के बाद। तो इसमें बताया कि अभी भी काफी गैप है कि किस जगह क्या है, कुछ है जिसकी वजह से लिंग समानता नहीं हो पा रही है। और दूसरा जो है इनका जो इसमें दिया है कि इसका एक फ्रेमवर्क दिया है। तो उसमें इन्होंने बताया कि ये बहुत अच्छा रहेगा। तो मैडम स्पेशली बोल रही थी आप जरूर गूगल सर्च करके इसमें देखें कि आप ये पढ़ के कि हमारा जो राज्य है इसमें क्या आता है, इसमें किस चीज का गैप क्या है। ये पढ़ने से हमको थोड़ी सी और जानकारी उसके बारे में मालूम होगा, और ये बहुत जरूरी है हमको मालूम करना, क्योंकि हम सब मिलके ही हमें आगे इसको भी आगे लाना है। और जो भी हमें कुछ भी इसके बारे में लिंग समानता या जो सुविधाएं देनी चाहिए उसके बारे में देखें। हमें चुप बैठने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि शुरू से लोग आए हैं सब, जिनको खेल और शारीरिक शिक्षा में थे वो लोग सब अपना योगदान दिए, जिससे कि आगे की जो जनरेशन है उसमें उनका लाभ उठे। यस मैम। Okay, another important one is this publication related with COVID-19 and the impact on women and sport, which I also suggest you to read and to check some of the 5 main aspects that they indicate we need to review as member of a community that works with sport, in order to check that when we build back after all this pandemic situation that the world has been living, we don't go back. We continue and to do it better. Like all the advancement that we have had on women's participation in physical education and sport continue going on, okay? So because we all know, and all women's organizations in the world have expressed their concern of how this pandemic will affect the advancement of women's and what has been already been achieved. अभी आप देखेंगे ये भी इन्होंने जो किताब है इसमें कोविड की वजह से ये महिलाओं पर किस तरह से उनका प्रभाव पड़ा है, महिला और खेल पे। इसे बताया कि कई जगह होती है जब महिला ज्यादा वक्त घर में होती है, तो इसलिए ज्यादा हिंसा हुआ है कोविड टाइम भी, क्योंकि ज्यादा वक्त घर में बिताए। लेकिन इससे भी ज्यादा है कि ये जैसे पैंडेमिक होगा तो इसमें ये जो भी इन्होंने जो मेहनत से इन लोगों ने कई पॉइंट्स, कई सुधार लाए, क्या वो सुधार वैसे ही रहेगा? नहीं तो क्या हम लोग दोबारा पीछे वापस निकल जाएंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि जैसे पहले था उसी को रख के हमें देखना चाहिए हर एरिया में जो है मे बी आर्थिक स्थिति में या मीडिया, हर जगह में हमें पीछे नहीं हटना है। हमें देखना है कि उसके आगे कैसे हम जा सकते हैं। तो जितने लोगों ने जंग लड़ा है,
जितने लोगों ने अपने मेहनत की वो व्यर्थ नहीं जाना चाहिए। इसलिए बहुत जरूरी है आप लोग ये किताब जरूर, ये आप गूगल में सर्च कर मिलेगा, इसका जरूर पढ़िए, क्योंकि इससे हमको जानकारी मिलेगी और हमें जरूरी है कि हमें जानकारी मिलनी चाहिए। हम शारीरिक शिक्षा और खेल के विभाग में, तो हमें अप टू डेट होना चाहिए। हमें हर चीज की जो अभी क्या चल रहा है दुनिया में, क्या जो उसके बारे में जानकारी होना जरूरी है, और वो हम जरूर अपने देश में क्या रहा वो भी हम आगे उसको ला सकते हैं। यस मैम। So, building back better. And this quotation is very interesting because it makes us reflect of what's going on and what's the situation. To emerge stronger from these crises, it is necessary to acknowledge and address the inherent inequalities in sport that discriminates on the basis of body, gender, sexuality, age, ability, caste, race, tribe, location, class, and religion. It means if we want to change, we need to face what is our reality, and we need to look, okay, what is there, what is the platform in there, and how can I do better. अभी आप देखते हैं कोविड के बाद, जैसे कहीं अभी देखते हैं बाढ़ आई उत्तराखंड में, तो वापस कैसे उस नगर को या उस सिटी को कैसे वापस लाएं, उसी तरह से कोविड हो गया। तो उसके बाद हम उसका बेहतर निर्माण किस तरह से करें। 3 प्रश्नों से मजबूत बनने के लिए हमें जो शरीर लिंग है, लैंगिकता है, उम्र, योग्यता, जाति, कुल, स्थान, वर्ग, धर्म के आधार पर भेदभाव करने वाले खेलों में असमानताओं को स्वीकार करना है और उन्हें संबोधित करना आवश्यक है। क्यों स्वीकार करना है? हमें मालूम करना है कि अभी क्या चल रहा है। हमें सिर्फ आंखें बंद नहीं करनी, अभी क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी होके तभी हम उसके ऊपर से हमें देखना चाहिए हमें और क्या करना आवश्यक है। उसी तरह से बेहतर निर्माण होगा। ये दासा और गैंद 2020 में दिया है, तो मैडम इसने ये हमको दिया है, क्योंकि हम किस तरह से बेहतर निर्माण कर सकते हैं। अभी एक कोविड आया है, कोविड से एक बहुत बड़ा ये है कि काफी समस्या आई है, लेकिन हम उसमें से कैसे उभरते हैं, क्या वापस कैसे हमारा निर्माण होगा, ये भी जरूरी है इसमें। Okay, so with this slide, then we need to think about, okay, social integration. Social integration is normally a concept that sociologists work with. So it's a two-way process between people. It's give and take, okay? It's what I said before, is to treat others the way they want to be treated. It's mutual, it's not about and respect for each other. It's voluntary, it cannot be imposed, okay? And it's shared access to and possession of power. मैडम ये बोल रही थी कि ये सामाजिक एकीकरण क्या है। ये एक दो तरह, दोनों माने आने लेना और देना इस तरह से रहता है, क्योंकि इसमें है कि हमें एक दूसरे की, हमें उनको रेस्पेक्ट देना पड़ता है। हम जब तक हम देंगे नहीं, हम उनसे ले नहीं सकते हैं, और इसमें कभी भी जबरदस्त नहीं, हमें वॉलंटरी तरह से करना पड़ता है। लेकिन हम सब मिलके एक एकीकरण तभी आएगा, सामाजिक एकीकरण तभी आएगा जब आप सब मिलके एक साथ अगर रहें, एक दूसरे को समझें, एक दूसरे के साथ दें, एक दूसरे को हम रेस्पेक्ट करें और एक दूसरा शेयर करें। ये इस तरह से होने से ही हम देख सकते हैं ये सामाजिक एकीकरण हो सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है कि जो भी जन है, जो भी लोग हैं, सब आपस में एक दूसरे मेल जोल बढ़ाएं, एक दूसरे का शेयर करें और अकेला नहीं हटे। तो इस तभी हमारा सामाजिक एकीकरण हो सकता है। यस मैम। Okay, so what is it? It is based on institutionalized process of social justice. It is manifested on both personal and structural level, and it also means organization. I can transfer that from one social sphere to another. It depends on transformation spirit. It is never perfect or permanent. We have to be working on that all the time. अभी ये जो हम बोलते हैं सामाजिक एकीकरण तभी हो सकता है जब हम सही तरह से बोलते हैं, तो उसको हम एक संस्थान के तरह से लें, और जहां हम लोग सामाजिक जस्टिस मिल सकती है। तो इसमें है कि हम लोग व्यक्तिगत तौर पे और उनको जो है स्ट्रक्चर तौर पे भी लेनी चाहिए,
क्योंकि हम जो एक में सीखते हैं उसको हम दूसरे में भी उसको उसी जो हमने यहाँ सीखा है उसको दूसरी जगह भी हम ट्रांसफर के इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसमें जरूरी है कि इसके लिए हमें जो है ये कभी भी क्या बोलते हैं वैसा रहता नहीं, इसे बदलाव आता रहता है, लेकिन हम उसमें परफेक्शन नहीं दिखनी चाहिए। लेकिन ये रहता है कि हम किस तरह से जो हमने सीखा है उसको सही तरह से समाज में लागू करें, सही स्पिरिट में। So this is a concept that we should be thinking and looking for more information. You check it in your Hindi, you can check it in any language, but it's important for our society to understand what is that of social integration. So in brief, there are many actions, documents, organizations that have pushed for women participation in physical activity, physical education, and sport. There are many, but again, now, and it says action. Because we know that, then is how we need to make it possible that in our close environment that happens. It's not something that is internationally, it's that it happens next to our door. And we mean that it's in our neighbor, in our school, every place, okay? Because these same documents indicates why it's important, why it is a benefit, okay? Now, the literature indicates that women do not participate in equal terms or practice physical activity for a healthy lifestyle, physical education, and sport. And when I'm saying this, it is not a cliche. The research indicates how important it is for a society to have healthy human beings, because the investment in money that has to be provided from government is huge if people are not healthy, okay? And still, and when I said in brief, women are not much present in leadership position in sport. अभी मैम ने इसको समराइज में बताया कि ब्रीफ क्या की, ऐसे कई कार्य जैसे दस्तावेज, संगठन, महिलाएं की शारीरिक गतिविधि, शारीरिक शिक्षा, खेल में हमें पता है बढ़ावा दिया जा रहा है, हमें पता है भारत में भी हो रहा है। लेकिन ये सब होने के बावजूद भी हम अभी भी देख रहे हैं कि कई लड़कियां, महिलाएं जो समान रूप से स्वस्थ जीवन शैली एवं शारीरिक शिक्षा में भाग नहीं ले रहे हैं। तो ये बोलते हैं कि हमें इंसान होने के नाते हमें चाहिए स्वस्थ, हमारी जो पुरुष और महिलाएं वो स्वस्थ होनी चाहिए। और स्त्रियों के लिए स्वस्थ हम जानते हैं क्योंकि इतना इसमें आर्थिक स्थिति पे भी होता है। जब हम बीमार रहते हैं तो हमें देखते हैं देश की आर्थिक स्थिति पे उसका असर पड़ता है। और हम ये भी देखते हैं अगर महिलाएं अगर स्वस्थ हैं तो हम देखते हैं आगे बच्चे भी, तो इसका एक पूरा भावी एक फ्यूचर पर रहता है। इसलिए बहुत जरूरी है हमें इसके देखने शारीरिक शिक्षा में सिर्फ नहीं, जीवन शैली में जो है उनको शारीरिक गतिविधि में उनको जरूर भाग लेना चाहिए, क्योंकि ये एक आगे का जो फ्यूचर जनरेशन के लिए बहुत जरूरी है। और जो बताया खेल जगत में हमने देखा है तो जो निर्णय लेने वाली स्थिति में महिलाओं अभी भी बहुत कम है, जो नेतृत्व लेती है बहुत कम है। पहले से बेहतर है लेकिन अभी हम देख रहे हैं वो बहुत कम है इसमें। Okay, so with this, now I'll explain you who we are, because you might say, so where are these women and what is she talking about this? I just represent one association that has been pushing for women's network all over the world to do research and to prove why it is important for women and girls to participate in sport, and it's a platform for practitioners and researchers to make it over. So here are some names that you might be familiar with because they have participated in the activities that has been done by LNCPA, but in these last 4 batches. अभी मैम बता रही कि ये जो IPASCO-वे है मैडम का, जो इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ फिजिकल एजुकेशन फॉर गर्ल्स एंड विमेन, ये महिलाओं और बालिका लड़कियों के लिए है। ये एक ऐसा अंतरराष्ट्रीय है ऑर्गेनाइजेशन है, ये बहुत ज्यादा काम कर रही है बच्चों के लिए, जो महिलाओं के लिए। इसलिए मैडम
महिला की कैसे एम्पावर करना है, महिलाओं को जो समस्या है, ये बहुत ऊंचे स्तर तक IOC यूनेस्को अलग अलग वेदी में लोग चर्चा करते हैं। और इनका जो बोर्ड था, मैडम अभी इसका जैसे बोलिए, अभी आप बोर्ड मेंबर देख रहे हैं, जो वाइस प्रेसिडेंट है, मैडम तो प्रेसिडेंट है ही, रोजा डिकिन मिलन मैडम ने सेफ गार्डिंग पे लिया था, बियट्रिस मैडम ने इंडिजिनस पे लिया था, और मरियम कौशी मैडम ने भी पहले क्लास लिया था। हमारे मरियन मेयर स्विट्जरलैंड मैडम कल लेंगी क्लास, और मारिया डिनॉल्ड मैडम ने भी पहले क्लास लिया। मारिया गुंडो जो फिलीपींस थी, मैडम ने साइकोलॉजिकल स्किल्स पे लिया। फातिमा मैडम हमारी रेगुलर जो फर्स्ट में हमेशा बोलती हूँ, हमारी ओलंपियन रही है। तो आप जब ये मेंबर्स का नाम देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि ये कितना बड़ा योगदान है इनका हमारा भारतीय समाज में शारीरिक अध्यापकों, शारीरिक शिक्षा के अध्यापकों को आके, क्योंकि हम में से बहुत लोग बाहर जाने के, हम लोग में से कितने लोग हैं जो बाहर जाके एक एक राज्य में जाके एक सेमिनार या कॉन्फ्रेंस कर सके, लेकिन ये मैडम का ही था। रोजा मैडम ने हमें बहुत ज्यादा योगदान दिया है, इनके ऑर्गेनाइजेशन ने बहुत ज्यादा योगदान दिया है, किस तरह से दुनिया भर का जो अच्छी अच्छी प्रैक्टिसेस है, जो अच्छी तरह शारीरिक शिक्षा में चल रही है, वो कैसे हमारे भारतीय शारीरिक शिक्षक अध्यापक को भी दें। Yes, ma'am. For us, it is important that all regions are represented because that's a way to understand culture and how we can support. मैम बता दें कि इसमें इनका जो रिप्रेजेंटेशन पूरी दुनिया में है, और हर रीजन से ये लोग पार्टिसिपेशन, आप देखेंगे इधर पूरे रीजन में से पार्टिसिपेशन है, और इनका हमेशा कॉन्फ्रेंस रहता है। इन्होंने कभी अपना कॉन्फ्रेंस बंद नहीं हुआ है। अगला कॉन्फ्रेंस चाइना में है 2021 में। तो आप देख रहे हैं पूरा कैसे चल रहा है, इनका कॉन्फ्रेंस चलता है, इनका हर रीजन से, इनकी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पूरे दुनिया से इनकी रिप्रेजेंटेशन है। यस मैम। So you are all invited to participate in our Congress in September 2021 in Tianjin. That is our quadrennial Congress. And here's the history of where YAPESABE has been. अभी आप सबको इनविटेशन दिया है मैडम ने कि आप सब इसमें भाग ले सकते हैं। जो है इनका जो कॉन्फ्रेंस है वो सितंबर 8 से 10 है, 2021 में ही है। और मैम दिस आल्सो ऑनलाइन, am I right? It's virtual also. Am I right? Even people Yes. can attend virtually. Yes, yeah. आप इसमें ये आप फिजिकली भी जा सकते हैं। किसी को अगर कोई इंटरेस्टेड है, आप देंगे इसमें मेंबरशिप, आप इसका अटेंड कर सकते हैं। तो ये कॉन्फ्रेंस का डिटेल्स आपको दिया जाएगा और आप इसमें भाग ले सकते हैं। तो आप इसका वर्चुअल भी है, जरूरी नहीं हमें वहां जाना है। तो आप में से जो लोग को इंटरेस्टेड है, आप जरूर चैट बॉक्स में डालिएगा, तो हम आपको डिटेल्स दे देंगे। So बाद में किसी को पूछना है तो प्लीज आप डाल दीजिएगा चैट बॉक्स में। यस मैम। So if you have more information, you can check in the webpage. All the call of action is already there. And if you have any doubt, you have representative from many places. And in India, the country representative is Dr. Usha. So you can ask her. Thank you. Thank you. Oh, thank you, ma'am. Thank you. So these are some of the publications, and I just will ask you, if you want, you can download free from our YAPESCABE webpage. In here, there is a book that speaks about women and sport in Asia, and there is a chapter about India. So if you want, you can check that one, okay? अभी YAPESCABE ने किताब निकाली, आप देखेंगे 2 किताबें हैं। तो भारत में भी है, भारत में महिलाओं का है, और छोटी छोटी किताबें आप फ्री डाउनलोड कर सकते हैं। YAPESCABE वेबसाइट आप जरूर गूगल सर्च कीजिएगा। Okay, and I was asked about national sport organizations. If you could start a national sport organization on women. Yes, these are just some examples. There are many in the world. I have to say that perhaps the eldest one is the Japanese Association of Physical Education for Women, JAPU, created in 1954, and the Korean Association of Physical Education and Sport for Girls and Women, KAPESCABE. Since 1954, all of them inspired by YAPESCABE, because their members went to the 1949 Congress, the first 1949 Congress of YAPESCABE, okay?
And here there are some that are very active, and you can check their webpage. We have the Canadian one, the Australian one, and you have one in Spanish as well. I mean, from Colombia. I'm talking about the years. I mean, some of them were created. There are many more, okay? And the Turkish Association, that is 2014, that is more recent, okay? These are just some examples for you to be motivated about your creating your national women and sport organization. अभी मैम बोलते कि हमें भी अपना जो देश स्तर पर महिलाओं को एक महिला और खेल का एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करना चाहिए। वैसे मैं भी हम सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ भारत अभी तो है नहीं, तो इसमें ये जो जापानीज था वो 1954 में था। अभी देखिए लेटेस्ट, आप देखिए कैनेडियन है, जापानीज है, यूएस में है, इन लोगों ने सबने लिया, तो ये हमारे लिए काफी अच्छा रहेगा। तो अभी टर्किश जो है रिसेंट है, वो 2014 में था। तो हमें भी इसकी शुरुआत करनी चाहिए, हमें भारत में भी कई चीजें शुरुआत करनी चाहिए। Yes, ma'am. Thank you for that. So, final comments. It is necessary to increase women's participation in sport in different roles, okay? So the ones we know, plus journalists, researchers, we need to motivate that. More efforts are needed to incorporate girls and boys to a physical education class, okay? And policies in place about gender needs to be enforced. And how to be enforced? Well, indicating to sport organizations that if they want to be fair to the organization and to the international movement, they have to embrace women's empowerment. अभी अंतिम टिप्पणी मैडम बता रही थी कि जो हमारे पीई के अध्यापकों हैं, प्रशिक्षक हैं, न्यायाधीश है, रेफरी, हम बोलते हैं पत्रकार हो, और नेताओं में सभी में हमें विभिन्न भूमिकाओं में महिलाओं को भी भागीदारी बढ़ाना बहुत जरूरी है। महिलाओं को आगे आना है, हमें अपने बेटियों को आगे आना है। इसके लिए अच्छा रहेगा वो जरूर खेल का स्तर और अच्छा करेगा। हमें ये भी जरूरी है कि जो स्कूलों में लड़की और लड़कों में कोई भेदभाव न करें, दोनों को एक समानता से शारीरिक शिक्षा का जो हमारी कक्षा है उसका पाठ्यक्रम कराए। और जब शारीरिक शिक्षा लेते हैं, हमें पूरी तरह से जो हम बोलते हैं, हमें समझना चाहिए कि मानव के समग्र विकास के लिए जो जरूरत है उस तरह से हमें पाठ्यक्रम चलाना चाहिए। और लिंग समानता के बारे में हमें नीतियों को लागू करने की आवश्यकता है, और संसद स्तर पे हमें जरूरी है कि राजनीतिक एजेंडा में इसको साथ लाएं। और हमें जरूरत है कि हर जगह जहां भी हमको लगता है कमी है उसको हम ऊपर उठाएं, और ऐसा हमारी आवाज जरूर आनी चाहिए, क्योंकि हम कई बार देखते चुप रहते हैं तो उससे हम आगे बढ़ नहीं पाते। तो जहां भी हमको लगता है कि कई जरूरत है, एक बदलाव की जरूरत है, उसको जरूर लाना है। यस मैम। So, physical education, QPE, is essential, okay, for life, to promote inclusion, to participate, to increase cooperation, partnership, teamwork, discipline, peace, and work. So, and we cannot be satisfied if things are fine in my place. We need to embrace equality in women's participation in all roles of sport. अभी ये बताया कि हम जब क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन के बता रहे थे, आपने देखा होगा हमने कई फैक्टर्स उसमें बोले। हमें जरूरी है कि ये हमको जीवन कौशल सीखने सभी को शामिल करने को बढ़ावा देता है, और सहयोग, साझेदारी, टीम वर्क बोलते हैं, अनुशासन है, शांति और कार्य जैसे मूल्यों को समझना और समझने के लिए एक आवश्यक प्रवेश बिंदु की हम बोलते हैं क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन जरूरी है। क्योंकि अगर हम सिर्फ क्वालिटी फिजिकल एजुकेशन देंगे तो हमें ये सारी जो भी बोले गए ये सब हम उसमें बच्चों में ये उभर सकता है। और दूसरी बात है, हमें इसमें सिर्फ नेतृत्व के पदों पर खेल में महिलाओं की उन्नति से संतुष्ट नहीं होना है। हमें खेल के सभी भूमिकाओं में हमें सिर्फ बोलना नहीं है कि जहां आगे जाना है सिर्फ उसी में नेतृत्व, लेकिन सभी भूमिकाओं में महिलाओं की भागीदारी की समानता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जैसे उदाहरण के लिए हम बोलते हैं जो खिलाड़ी है, जो कोच है, और या जज है या पत्रकार है, अब हर क्षेत्र में देखिए, हर जगह हमें देखना चाहिए कि लिंग समानता या महिलाओं को भी समानता मिलनी चाहिए। यस मैम। Okay, so just as a matter of respect, I know there are some fantastic women in India who have made a difference in sport as well. So I just want to share with you this video. I will stop sharing my screen
And thank you very much. You have it here in your different languages, not all. So please, Pranish, if you want, let's play the video. Ganesh. Stop sharing, Ganesh. And I hope that after my presentation, everybody's convinced that we need to promote physical education and sport, and to make our best effort to make women and girls to participate. Okay. Start. So I hope you enjoyed this video. ये लोटा बेलन चलाने वाली भारतीय नारियां हैं। अब कहाँ ये निक्कर उक्कर पहन के दौड़ती फिरेंगी? कि हमारे जैसे देशों में विमेंस टीमें काम के लिए नहीं, सिर्फ नाम के लिए बनाई जाती है। One more video, sometimes. One more video. Okay, I think. Can you share the second video, please? It was wonderful. You Do we have time? If we have time, but otherwise, it's okay. I mean, I want. You can just give the second videos. What's it about? Let's let them there enjoy the videos definitely. Okay. Can you put the second video, please? For the ones who don't speak Hindi, the few lines, Dr. Usha will let you know that they refer to the old comments that in the past used to say that those sports were not for women and the way they were dressed was not for women. Okay. Fine.
Okay, so I hope you enjoyed. I mean, I think it was important to also to indicate that there are some fantastic sport athletes in India. And I want to take advantage to also make an announcement in here, because the role of Yapescave has always been to make visible the achievement and also to promote women not just as athletes but to in all roles in sport. And there is one role that is always looked down, and it is the woman who research in sport and physical education and in academia. And I just want to take advantage that Dr. Marian Kushki is here to announce that a month ago she was selected as National Eminent Woman in Human Science in Iran, and she got the prize from the ministry. And last week was selected as Eminent Faculty Member in Research in the School of Education and Psychology of Shiraz between men and women. So these are the sort of things we also have to acknowledge, because it's women playing a role in all areas of sport. So congratulations, Marian. Well, and I hope that you enjoyed this presentation and that everybody is 100% convinced that we need to provide a platform and a place for girls to participate from young age at school in a physical education class, to support her in sport, but also then to accompany them in all roles. Perhaps not everybody can be an athlete, a top athlete, and that's what is not expected. But it is good to participate in physical activity, and you can support, women can support other women to participate by playing any different role in this wonderful world of sport, physical education, and physical activity. Thank you very much. Thank you so much, Madam Maria. Kaushiki, congratulations, you made a name. So you proved you're proving to the world that there's no difference. Women can make it. So congratulations, madam. Madam, maybe the award of it, if you could just put in the chat box, maybe I could translate data. Madam को एक अभी जो Mariam Kaushik मैम को एक award मिला है वहाँ पे, जो कि सारे पुरुष वर्ग और महिला में देखा तो मैडम को ही मिला है, तो ये हम सब मैडम को अभिनंदन कर रहे हैं। और दूसरी बात, आपने जो 2 वीडियो देखे थे और मैम ने भारत का ही लिया, भारत के खिलाड़ियों का, इसमें देखा कि हमारी बेटियां, हमारी महिलाएं, लड़कियां कितनी संघर्ष कर रही हैं, इतना आसान नहीं है। I was saying the struggle, I was trying to put across the struggle. तो ये संघर्ष है, हम आराम से बैठ के नहीं ले पा रहे हैं। आप देख रहे हैं ये सारी महिलाओं ने, हमारी भारत की बेटियों ने जो नाम रोशन किया है, इसके पीछे कितना संघर्ष है, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। और इन मुश्किलों में अगर कुछ नियम ऐसे थे जो उनको मदद में आता तो उनका रास्ता और भी आसान होता। इसके लिए ये सारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पे काम करती है। आप ये याद रखिएगा कि उनको क्या चाहिए, किसकी जरूरत है, जिससे कि वो और अच्छा ट्रेन कर पाए, अच्छा खेल पाए। तो इसलिए जो मैडम का जो ऑर्गेनाइजेशन बहुत ज्यादा योगदान दे पा रहा है। Yes, ma'am. One question only from my side, as when you talk of physical education, you have a number of students, girls who opt for physical education, but they don't go beyond. From coaching, we find it's comparatively less, but physical education teacher, we find them more. But when they go into the other, so I don't know what could be the possible reason that if you look at the statistics, PE teachers among women are good number. But in terms of coaches, getting into other positions comparatively lesser. So what do you think could be done here in this angle where we could, I don't know whether it has to do with something of the added responsibilities, I don't know what it is. So what do you think could be suggested? Maybe because it's at our level, but I'm just trying to put across the statistics to you. It is true. We don't have, and I have to say that as physical education teachers, there are not many women in some countries in the world either, okay? So one of the example, we have to pray by example, okay? So all the organizations should have in their policies women's participation. And I have to say that there are some organizations that they have started to promote courses. Like, for example, we provide, if there is a payment, for example,
to a course, we said, okay, we give you one free if you bring a girl, if you bring a woman. Okay, so there are strategies that many have put in place. In some government are giving the funding to the organizations based on the gender equality. So they have, for example, 30% quota. If that's the case, if they have it, so they will give support for that. Another element, courses. I think, and this is my opinion, particularly from the area where I come from, in many sport federations, there were no courses open enough to make people participate. Because in some, and I would say this is a practice that is still in place, they would invite their friends to become coaches, to become judges, to become referees, but they didn't used to leave it open to everybody. I think the time has changed, that this sort of governance that was in the past, I mean, and it is, this traditional governance that I invite the ones I like, they have to leave the door open and to make access to all those to be educated in different roles. If that happens, I'm quite sure that it will make a difference and the numbers will increase. And you might say, well, but it doesn't happen. I can prove it that it happens, okay? It happens that some sports organizations, they have closed themselves the doors just because they didn't allow everybody to participate. When we have done some studies in governance, we have observed that some sport organizations, they don't offer courses for coaches and judges in 4-year times, in 3 years time. They just would offer one in the first year of the Olympic cycle, but then there are no more. So those are elements that have impact in a negative way to have right now the number of women that we have in all roles. But of course, we cannot deny the society plays also the role, like how they are foreseen on TV. I have to say that in the US, I would say it's where we can find much more publications related of how women are presented in the media and journalists. And even though with all the efforts they have done, still it is not enough. So you can imagine in all the other places where this is not spoken, where this is not said. So we have to continue speaking and making it known what's the reality we have. And just by that, I think we can start changing, okay? So I would say sport organizations, public and private, okay, governmental and non-governmental, they have a role to play in this. Well, thank you, ma'am, for this wonderful information. We come over to the remarks now because I couldn't find much of the questions as such. Madam Kluka, for your remarks, please. Your session was highly appreciated because many of them I liked it because you put it with Indian examples, Madam Rosa. Madam Kluka, for your remarks, please. Rosa, this was an outstanding presentation. I think that you have a presentation style that allows you to speak about perhaps unpopular topics in some parts of the world, but you manage to do it with some elegance and grace. And so for that, I'm appreciative, and you make a wonderful president. I wanted to give some extra thoughts on this because sometimes we have so many policies and so many declarations at the international, national, even at the local levels, but it's on paper and we're missing the other aspect. And so I love the word global because it combines global with local. And so we have the UN being supportive. We've got UNESCO being supported. Of course, all the women's, the organizations that focus on women, they're very supportive.
But for some reason, on our local level, with myself and my family, things sometimes break down. So let me just say this, because I know that there are many men who are participating in all of this. In my opinion, men must be cheerleaders for this initiative, because what happens in the house or in the community, it's not done by one sex or the other sex. It's usually done somehow to coordinate what's going to go on for the day. And so men play a huge role into not just allowing, because that's saying that you have to get my permission, but to encourage young girls and your wife to go and be healthy, be active, and think about this: to move is to be free. And the participation in any kind of physical activity will help all of us to feel as though we have some amount of freedom. And wouldn't that be wonderful? Another piece is men or fathers who have daughters. Oh my goodness, this could be your best avenue for success. My father only had myself. And so he would see discrimination and no opportunities for me and so forth. And he would get out there and bang on everybody he could so that I would have at least a chance to fulfill whatever it was that was about me. So I thank my dad for doing that many years ago when it was not at all popular. The other one is for each of us, whether we're male or female, older or younger, what have we done? What have I done? What have you done on a daily basis to be sure that both boys and girls, men and women, are participating in physical activity and physical education? If we, as the people in the profession, don't ask ourselves that and answer it through our behavior, who will? Who will? So we must assume that for physical education and physical activity and sport for every single person that we come in contact with, we must take that responsibility and be positive about it, because we know how good it is. And Dr. Uri does that on a daily basis. Dr. Rosa does, Dr. Beatrice does, Dr. Marian does, and for sure, Dr. Usha does. You know, and so each of us must claim that and wear the mantle of super people in order to be able to make this work, because that's taking the local piece, global, and what are we doing with it locally? So thank you. And Rosa, I loved your presentation. Thank you, Thank darling. you. I just like to share this to at least one sentence of it. मैडम ये बता रही थी कि हम में से आप में से कितने लोग जो पार्टिसिपेंट सुन रहे हैं, कितने लोग फिजिकल एक्टिविटी, हम जो शारीरिक गतिविधि है अपने घर में, अपने फैमिली में, अपने बच्चों को, कितने लोग जो ऐसे जो जिनके बेटियां हैं उनको कराते हैं, कितने लोग अपने माताओं को कराते हैं. तो ये बहुत जरूरी है, तभी हम अपने में शुरुआत करके फिर हम समाज में बाहर जा सकते हैं. Because as Darren rightly put, I don't know whether I have time, because what I found is I ask my students from different communities, why don't you get, I'm going to have a set of exercise, but please make your mother work out for 5 minutes. If you love her, at least 5 minutes. So some said, no, I'll make my wife do, but I'm not going to make my mother do. But then so far I could not get that change. I said, when I can do it, I'm more than the age of your mother, then you can definitely. But then I found they felt it was not required. It was not needed for them. So a person, for them, they find, no, she's already old, so she can't do it.
I found there are certain cases. I used to ask, the husbands are very particular. They are young, they keep active. They are doing regular physical activity. You look them after around 20 years, you will find the same. So they tell me, I bought a treadmill for my wife. She does it for one day after. So I think, as you rightly pointed out, I think it's a very important. We should start in our own family of the peak community and then spread it outside. So thank you for this important message. Dr. Yuri, for your remarks, please. So you need to unmute, please. I was saying that the man here is in the minority, so he has to be very careful. Right. Dr. Kishore is there. Today, Dr. G. Kishore sir is there. I don't see him. I hope he is with me, so we will have. Yes, he's with you. He's with you. Right. Yeah. So I feel lonely, but never mind. I will make my point. Rosa, you are a great presenter, and you do it in such a wonderful way that makes people listening to you, because you don't force yourself on the listeners, on the participants, but you share with them the knowledge, and you have presented the development of women in sport throughout the centuries in such a beautiful way that everyone that was listening, I'm sure, will say, we support it. We need to do more. We need to be proactive. Time to change. And that's actually what you wanted to accomplish. And I think in this respect, congratulations for a job well done. I appreciate that very much, and I support you and your mission in any possible way. Maybe two comments that I will share with the participants and the panelists. I think time has come that if the change is not moving in the proper speed forward, in other words, if the change is not coming from bottom up, from the people, from the participants, from those who have the responsibilities in the field, then governments and sport organizations should legislate law and acts that will ensure the participation of women and the position of leaders of women in sport organizations. We have done it in Israel. I mean, we have legislated while I was the director of the Israeli Sport Authority, the Israeli Sport Administration. We legislated an act, part of the sport law, that says that in every sport organization executive board, the presentation of women should not be less than 30%. If it is less than 30%, the organization is not entitled to receive governmental funds. So simple. And it opens doors, and it did make people start thinking. And you know what? Once the organizations actually got women on their boards, a miracle happened. The discussions and the conversations during the meetings were far more nice, better, efficient, and there were no fights and not in an aggressive way. So women have not just a lot of knowledge, but when they come, it adds special flavor, special spirit to the organization. And we should not underestimate that either. So I believe that as Darlene just said, she called it local. I accept that. I call it bottom up, top down. It has to be a holistic approach, and then we can win. And I want to say one more thing. I personally would like to see a far more proactive attitude. Women should take the lead. And in many cases, it works. And I can also tell you and share with you that I believe in role models.
role models is a key. And you know, Rosa, you shared with me 2 days ago a video clip that Beatrice presented on all the wonderful women who are at the moment either presidents or prime minister or have a very high position in the government worldwide, globally. Let's do it in sports. It will bring a change because there are women who are making such a wonderful impact on their sport associations. We heard Lindsay, right, the other day. She's an Olympian, she's a world recorder, she's a world champion. We need to take many of those calibers and spread the word out and see that it has an impact on the kids, on the girls, and the next generation. And I like finally to say that I very much appreciate and support the United Nations Women Generation Equality. We are now in a generation equality, and let's stick to it. Let's go for it. Let's move it forward. We are all in generation equality. Thank you. Thank you so much, Dr. Yuri. And when you speak, when the president speaks, then it matters. So the president's voice, it gives us. So thank you for making us stronger. Thank you so much. Madam Beatrice, please, for your remarks. Ma'am, yes. Well, thank you for being here today and listen to Rosa. It was a very good presentation. You talk in a very nice and warm heart in a complex issue. And it was a very good review of historical dates and themes on women gender equality. And to see that the biggest change occurred in the 20th and 21st century. That's what we are living now. And I have some thoughts that I would like to change with you. To see the power of social change in a broader and long term. Power is embedded in our relationships, and power change within time. It's not frozen that you showed. It takes a long time sometimes, but it changes. We need to have hope. We need to fight. And to find a balance on power is not easy. The pendulum hangs to one side and sometimes to others, depending on so many circumstances. Sometimes you can control, and then there we are in the middle of that mess, and then the things start changing. Although most of the time it hangs towards the man in historical view. That's what the history of the woman. But we can see that the societies have changed in more complex way, more differentiated in various functions and social roles. And the social figurations in all societies have changed in so many ways, and the powers, of course, have changed. And for example, the Industrial Revolution, there was a need for women to go out and start working. And that was a big change in our society. And then for sure, the relationship starts changing. It was a fight for the men accept women to go out and etc. And the changes were not always smooth. It in fact occurred under many tensions and pressures. That's the case of participation of women in sport. It was a movement created by men to men. And you can see that how many women efforts, lives, and organizations had to scream, fight to achieve some change the way that we are now. And we, women and men, we need men and women. We're not only women. Needed to keep fighting, struggling to achieve a better gender balance for future generations, for a peaceful and better world. Oh, thank you for bringing such a good subject. Thank you, thank you. Thank you. Thank you, Beatrice. Thank you so much. Madam Mariam Koshi, seeing after a long time. Warm welcome, welcome from India. Congratulations once again for getting the award.
So you have proved what women is. Ma'am, for your remarks, please. Thank you, dear Rosha. Hello to everybody. I'm very glad to be here with you. Thank you, Rosa, for your wonderful presentation. It includes very important points that I used it. One important point that Rosa mentioned was about the impact of leadership, women leadership on women physical activity. And one of the main concerns which is arise is that women are not prepared for management position biologically and psychologically. I searched it in many sources, but I couldn't find any reference for that. If any one of you, or Rosa, you by yourself, have any reference for that, I greatly appreciate to introduce me, or if you have any opinion about this, I will be very thankful to explain to us. Thank you again for your presentation and all of your encouraging words. Thanks. Thanks, ma'am. Okay. Rosa, ma'am. Ma'am Rosa. Yes, thank you, Marianne. Actually, with the actual debate that's going on by some comments that were said by one of the Olympic family, it has come out lots of reference related to women's competence to be leaders. And there are indeed many references that we could share. And in the presentation, there were some that are related with that. There's a 2019 book that it's called, maybe I shouldn't do any propaganda here, but it's The Business of Women in Sport. And in there, it is indicated, I mean, some reference in which there is no evidence that women are not prepared for leadership or governance. I mean, that was a thought from the past, and that's part of that stereotype that has been embedded in society, in which the stigmas and the stereotype remains in society of what was thought women were able to. It's like in the past, women were not supposed to practice sport either. But research, science has demonstrated that that was not true, okay? That was not true, and that yes, we can, and women can participate, and there is beautiful evidence out there of the benefits, but also the leadership style that women provide to organizations. Thank you. Thank you, Ma'am Rosa. Dr. G. Kishore, sir. Sir, for your remarks, please. Thank you, Professor Rosa. I think we have touched upon a very important subject which has got a lot of relevance to India. Especially, you might be aware that in the last Olympics, the few medals which we secured were in badminton by PV Sindhu and wrestling by Sakshi Malik. So that way, in India, we are proud of our daughters and sisters and mothers. So it's a country which has contributed. Women contribution is enormous in every sector, especially in sports too. Now we are trying to do, promote more sports participation, and also empowerment of women is taken up by government. There is a separate ministry with us looking into women empowerment, and also we are going to have a separate workshop on the 8th of March, Dr. Usha. It's a PEAT training program, sir, for women by the Ministry of Youth, Ministry of Women and Child Empowerment. Yeah, so we are undertaken a separate training program for the entire women of the country. That day we would also once again will bother all of you for your gracious presence, and that is something to look after. We have got a huge women population, and especially girls, the youth, amongst the youth population. We need to see that they are empowered, and the empowerment, of course, without physical education and participation in sports, it cannot be done. So your presentation has got a lot of impact, relevance to the women of our country, and I thank you profusely, and also all the other panelists, Dr. Yuri, Dr. Floka Madam, Dr. Beatrice, Madam Mariam, everyone
who are in the panelists who have contributed. And I'm sure that this will should have definitely benefited our physical education teachers and community coaches. Thank you very much. Thank you, sir. Thank you so much, sir. So we come to the end of the session, and it was such a the deliberations were so good. I think it's a never ending. And Pranesh, can we have the feedback, please? Pranesh. Thank you to you all for your comments. And I will always insist that it is so important that the change start happening at school, because it is in there and from very young age when girls and boys can understand that both of them have the same rights and both of them can participate in all fields without any sort of discrimination. And in here, of course, we refer to physical education and sport, but it's also in science and in other areas in which there was this old stereotype that women were not allowed to. So we need to evolve. We need to just be part of a bigger community, and how, as the way you indicated, we are part of a generation equality. We are changing, okay? We are in a new moment in history in which we really have to forget what was said or what was believed in the past. There's lots of knowledge outside, and we know that some stereotypes were created because of various interests, but we are in a position to change. And the other important element while doing all this is that I observe that if we don't speak the language that people in general can understand, then we are not doing the job. Then it's not worthy. And while reviewing, I observed that there are many documents out there that they are not translated to many languages, and they might be beautiful, but if they are not, they cannot be read, they are non-existent. Okay, so this is also a lesson for us organizations to understand and how we can get closer to people in general. Okay, thank you to you all for your comments, because it was very, very interesting. Thank you, Madam Rosa. मैडम बता रही थी कि जैसे हमें जो लिंग समानता है महिलाओं बालिकाओं में समा में, बच्चों को जो छोटे प्राइमरी स्कूल है वहां से हमें शुरुआत करनी चाहिए, सिर्फ खेल और शारीरिक शिक्षा में नहीं है, वैसे भी हमें देखना चाहिए कि हमें कोई अंतर दिखाना नहीं चाहिए। हमें बोलते हैं बेटियों में, और इस तरह से अगर शुरुआत करेंगे, वो एक दूसरे में अंतर नहीं दिखाएंगे, जब ये बड़े हो जाएंगे तो हमें दिखेगा कि काफी ये भेदभाव में हमें ये जो है ये कम होता रहेगा। और दूसरी बात मैडम ये बता रही थी कि जो किताबें हैं वो सारी ऐसी भाषा में होनी चाहिए कि जो लोग समझ सके। जब भी हम कुछ बात भी करते हैं ऐसी भाषा में होनी चाहिए जिससे कि वो जो बोलना चाहती है वो दूसरे व्यक्ति तक पहुंच सके। तो मैडम आप सबका शुक्रगुजार है। मैडम कहती है कि हम आप सब अच्छा कर रहे हैं और आप सबको धन्यवाद भी देना चाहती हैं। So on behalf of the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India, Khelo India, a big thank you and hats off to our Iron Lady. I said Iron Lady because you move and you get things done. That's something. So when you speak, the voice is heard. It's not like anybody who speaks. And then you being the president of PASCAWay, definitely we find the journey that came across. It is something which is very bright in 2020s and 21, which is just seeing. So ma'am, thank you so much. We are indeed blessed and honored. And I think a special thanks from the ministry is for your support to make it truly international, where we had more than 30 countries participating in all the 5 batches, almost 57 international speakers coming in, covering the entire world. So I think it's something which is unimaginable, but the entire credit goes to you. It is you were the person who did it. I could say it is PASCAWay who did it. So the whole credit goes to PASCAWay. Thank you so much, madam. And the session was indeed so wonderful because it's for girls and women. And as Dr. Yuri said, that he's a minority, but we had Dr. Jagdish Kishore sir also came in, but definitely you both are there, was for the women. And as you rightly pointed, thank you, ma'am, for this informative session. And we found all our participants they highly appreciated your session too.
Madam Darlin, I always believe it's a light. And when you speak again, you speak in things which is really practical implementation, and your suggestions and inputs are always valuable. As I believe you're a great mentor, along with Dr. Rosa ma'am, who sees that the Indian P programs get stronger and stronger. So we have the light. So because of the light, you're going stronger. Thank you, ma'am, Darlin. Thank you so much. I'd like to thank Dr. Yuri, the president of XP, because I rarely come across where it's a male, but you are a person who would never say that. You take everybody along. If you have a president like this, and what else do we need in a curl? If you have a president like you who understands things, don't you think the world is going to be a better place for us? So it was so nice to see your vision and the change that you brought in your country, Israel. Definitely, I think all the other countries could be bringing it out. Thank you so much, because you're a great human. I say you're a great human. First, maybe the rest of the positions comes in later. That's why you're always with us in the program. Thank you so much, Dr. Yuri. I'd like to thank a great anthropologist, Madam Beatrice, the vice president. They passed away, a great anthropologist. And you bring in things, because today you brought in certain points which are so valuable. Ma'am, thank you so much for your valuable input. Thank you, Madam Mariam Koshi from Iran. It's a long time, but it was your presence has been a great blessing for us, because today we had an award-winning person right sitting, being with us virtually. Thank you so much, ma'am, because it's a great contribution you've done for your country. And it's important where a woman is brought to the limelight in a country. That means it's something which is very meaningful. Thank you, ma'am, so much. And look forward to your further cooperation. I'd like to thank Dr. G. Kishore, sir. Maybe if you don't see him the screen throughout his day and night, you find him behind the screen working so hard to see that how this program gets added weightage, mileage, and supporting every venture. I also like to tell sir, as a person who would be there for the women and girls, you do anything so that things are smooth. Like you talk anything for the women, so they're okay. So we are very lucky to have a great. Usha, I hope you would have informed about my leave of absence due to COVID. I was also affected. I said that. And, so I was got affected. recovered. Sir had recovered. Sir had COVID. He recovered. But always he was, in spite of all that, you'd be in the office sitting there. Maybe the screen was not on, but he was visually seeing everything. So sir is a great administrator and a great supporter for the sporting, and especially women. I think there is no. I don't think there'd be such administrators who are there to see every athlete, irrespective of what the gender is. Everybody's taken care of. For him, the prime responsibility is what support you require, only that you require to tell. I think you have again blessed to have a principal and a great administrator, region director like Dr. G. Kishore. Thank you so much, sir, for your valuable support. I'd like to thank Dr. Sanjeev Patil for the co-host, a person who's working day and night behind the screen with all the Dr. Sanjeev Patil. Thank you so much. I'd like to thank Pradesh and Hari for the technical assistance. All my dear PE teachers and coaches, I really need to thank you, because you are the ones who are working, and truly you are the true leaders, you are ambassadors of, and you and the entire future lies in your hands. And you have been doing a great job. So I need to thank you, have a pat on your shoulder, even though we can't see you, but definitely we'll see someday, we'll see face to face. So once again, on behalf of all those present here, a big thank you, namaste. And high five, bye-bye. Bye-bye. Thank you, namaste. Namaste. Bye-bye. Bye. Bye-bye. It was a pleasure. Yeah, thank you. It was nice.